ठहरो ठहरो, आते हैं बच्चा आते। Are you getting my voice? S means message. Are you getting my voice? Yes, yes. Yes. Is it board clear? Is it board clear? What I have written, board is clear? Yes, sir. Okay. I think now you are getting the board is clear. No? S message. S means I'm going to continue. Yeah. I think no people are saying no. Yes, sometimes some people are saying yes. No. I think you are not getting bored. Some people are yes, some people are no. Little bit, okay, little bit you are getting. I don't know why it is live is not clear. No, better bit. Okay. Yes, clear. Some people are some no. Yes, clear now. Yeah. Okay, it's a clear. Right. I think you are getting my voice and it's a very clear board what you are getting here. Okay. Now. Okay. Now you have to study what you have to study the units in the section what you have to study. Okay. So that is a very important. No. So we know that. So first unit one number 1 unit. Okay. Unit number 1. What are the topics you have to study majorly? How you are going to study any 3 units you have to study perfectly. Then it's a better to go for the other questions. Okay, any 3 you take out, that's your choice. But if your people are writing is good, then you go for theory. What is the questions you go for that? If you are what is that your write up part is not good, then you go for the mathematics
equations. If you are good in mathematics, if you go for mathematical equations, there's a Schrodinger time independent particle in a potential box, Cronin Penny model, not required much theory part. Okay. Okay, but anyway, unit 1 you have to study it. Then it is going to cover most of the short questions it will going to cover, no? So here the LAQ I am discussing, long answer question, 7 marks question I am discussing, 7 marks question I am discussing. Okay. So first part we have to study here the crystal systems. Okay. Very rare cases he is asking that crystal systems. Okay. Crystal systems he is discussing. Crystal systems are Miller indices. Are Miller indices. Okay. So are powder diffraction method. Powder diffraction method. Powder diffraction method. Okay. Powder diffraction method. So this is your 2A question. Okay. Unit 1 I have to write question wise I will going to write. So then I have to say this is your 2A question. Okay. We are discussing 2A question. So 2B you have to write down. So defects, what is that? So short key defect, short key, okay, short key defect or Frankel defect. 100% he will ask from this one question, he will ask Frankel defect or short key defect. Okay. So next I will go for the 3A. 3A I will go for that chronic penny model, chronic penny model, chronic penny model, or what is that? Hall effect. So Hall voltage derivation, otherwise Hall voltage derivation, Hall voltage derivation. Okay, derivation you have. Next 3B he will ask. Okay, 3B semiconductor, no, Hall voltage derivation. 3B down section, if you will go for the down section here. Okay, what you have this? This is in this section you have, what is this second part? I think 3A 3B. Here Schrodinger time independent, Schrodinger, no, I think dielectrics. Then here you have dielectrics, no, here dielectrics you will get 3B, you will get dielectrics. Next for 1.5 unit, no, dielectrics you will get electronic polarization derivation, electronic polarization derivation, polarization. Otherwise here capacitance bridge method, capacitance bridge method, you have to study here this section. Okay. So if you go for last unit is he will ask from the 6A and B lasers. In the lasers, ruby laser, ruby, helium neon and semiconductor. Question he will going to ask from this. If he will not ask this one, he is asking Einstein coefficients, Einstein coefficients he will ask. Okay. So I think you are getting this thing. Downside, okay, downside is not getting. Okay, 6B he will going to ask. 6A ruby laser, helium neon laser, semiconductor, Einstein. 6B I am writing in this gap. Okay, 6B I am writing in this gap. So this is a ruby, helium neon, semiconductor and Einstein coefficients. So 6B I am asking here what is the optical fiber, no? Optical fiber you have here numerical aperture derivation, and here fiber drawing methods are very, very important. Fiber drawing method. If it is asking not two questions, the types of fibers you will ask third, very less chance you have. So any three you take out, either these three you take out or fourth, fifth, sixth you take out, and 2, 3, 4 you have to take out. That's your choice. If you are good in any one, then
you have to take out like this. Okay, so it's clear? It's not clear? Sir, but okay, after type of the lasers, okay, so ruby laser, helium neon laser, semiconductor laser, then Einstein coefficients. Einstein coefficient is the side you have, all right, that you have to note down. And the fourth and fifth question, if you are note down this thing, I'll go for fourth and fifth questions. Okay, fourth and fourth. Can I clear this on the board? Just screenshot or anything. So I will go for fourth and fifth units. I will go for that. What is that? Means fourth and fifth questions. I will go for that. Okay. Okay, right, chalo. So fourth and fifth questions, I'll erase this thing. And question wise, you have to study. Always remember, don't go for total complete unit. And if you go for study like that, you are not getting properly. If you are, these are that means in this question 2a you are reading this question or that question, anything you have to, any one question don't study. Okay, so आप ऐसा पढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होता आपको. आखिरी का आयता क्या होता, if you are studying this question, suppose what is you studied, Miller indices you studied, he will ask sometimes seven crystal system, sometimes powder diffraction method. In these three, powder diffraction method is very very important, but always he will not ask powder diffraction method as a important. So most of the time he asked, but rare cases also he will ask. तो powder diffraction method पढ़ लिए, मिलर इंडिसेस ने पढ़ लिए, सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स ने पढ़ लिए, तो गया. तो इसके लिए क्या करना, what you have to do is first what you have to do, go for what he asking question, perfectly 3 questions you are studying, then you can do it like that. Okay, now fourth question, fourth A I am going for that, fourth A I will go for that, fourth A I am going for the fourth A. Okay, fourth A you have, so Schrodinger time independent, Schrodinger time independent, time independent, independent only he'll ask, dependent he will not ask. Okay, so most of the cases means 98 cases, 98 percentage, if he will not ask, what is he going to ask, particle in a potential box, particle in one dimensional potential box, in one dimensional potential box, potential box, definitely 100% one question asked he will from this thing. B, so Maxwell equations, Maxwell equation derivation, Maxwell equation derivation he will ask, means differential form to, sorry, integral form to differential form. Okay, so otherwise what he will going to ask, he will going to ask about what is that, what is pointing vector, pointing vector, these two are very very important, pointing vector, pointing vector, definitely 100% one question he will ask in these two, very very sure questions are these things. Okay, fifth A, what you have fifth A, I'll go for fifth A. What is the magnetic materials, magnetic materials you have, you know that, so Wies domain theory, Wies domain theory
Weiss domain theory or Weiss molecular theory. Weiss molecular theory. Weiss domain theory or molecular theory. Next, in this one, what is that? Meissner BCS theory, Meissner effect. Sometimes we ask BCS theory, sometimes ask high TC superconductors. High TC superconductors. Superconductors. High TC superconductors. Okay. So sometimes he will going to ask about, very rare cases he will ask for the long question. Meissner effect. Right? So this is the way he will going to ask any three you have to study it. Clear? Now getting no? So can I start first unit? First unit I will going to start. Don't call. Why? Because some people are trying to call me. I don't have here in my home internet service because of this Ganesh, no. So the lines are breakdown, Wi-Fi breakdowns. They are reconnecting. They are trying to reconnect today, but it is not over. That's why I'm using the mobile data only. I'm going to taking the class. That's why it is taking very late. Okay, so please don't call. If you are going to call, no, it is disconnecting. Your video, online video is disconnecting. So I am reading message. Sir, backlog वाले को भी same portion. Yes, backlog also same portion. You are belongs to AICT. AICT का अगर portion रहा तो भी same है. Okay. चलिए. So I will go for before I will go for this thing. I will going to share this link to other CSC students. So who are CSC students? Group you have to share it. Okay, CSC A students, CSC B and C you have to share it. Why? Because that people are also asking about this. Okay, as possible as you have to share it. Then I will going to start first. First question. CSC B and C students, you have to send to your nearby friends CSC B and student. Okay, CSC A students are already in the students are asking, sir, can I study 4 questions? How you are studying 4 questions? 4 क्वेश्चन पढ़ के क्या करना चाहिए? पास होते क्या? बोलिए. 4 क्वेश्चन पढ़ना नहीं है. 4 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? आप एनी 3 यू हैव टू स्टडी. एनी 3 का एक क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज आई एम गोइंग टू क्लियर यू व्हाट यू आर थिंकिंग. योर थिंकिंग्स आर डिफरेंट. कैसा थिंक करते रहते हैं अपने. देखिए बच्चे ज़िंदगी में कभी भी क्वेश्चंस ऐसा पढ़ रहे हैं, सर 1 2 3 4 पढ़ ली तो बस है क्या? ऐसा नहीं है बाबा. ये 4 क्वेश्चन पढ़ो. 4 ये पढ़ रहे, 4 ये पढ़े तो ये पूरा पढ़ना है. 4 बी पढ़ना है. मतलब ए बी पढ़े तो एक क्वेश्चन है. तो ए बी में कितने हैं? ए में स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट भी आ सकता, पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स, मतलब दोनों भी पढ़ना है. ऐसा नहीं है सर 4A के अंदर स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ा, 4B में मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लिया, ओवर. पॉइंटिंग वेक्टर नहीं पढ़ रहे, ना पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स नहीं पढ़ रहे. ऐसा नहीं है. ऐसा करेंगे तो 100% फेल होते. ओके, सो व्हाट यू हैव टू स्टडी? यू हैव टू स्टडी कंप्लीट क्वेश्चन. कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए. 4A में अगर स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट तो आता, नहीं तो पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स तो आता. 4B में मैक्सवेल इक्वेशंस तो आते, पॉइंटिंग वेक्टर तो आता. मतलब 4AB मिला के एक क्वेश्चन बन गया. ओके, ऐसे 3 क्वेश्चन पढ़ना है. आप 3 क्वेश्चन पढ़ना है. मतलब कहाँ पे भी AB, 5AB मिला के एक क्वेश्चन, 6AB मिला के एक क्वेश्चन, सो 1AB मिला के एक क्वेश्चन, 1AB मतलब
आर भी बढ़ना, इधर दिस वन और दैट वन, इधर दिस और दैट। मतलब मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ, ये आया तो ये आ गया तो ये आता, नहीं तो ये आया तो अदरवाइज यू विल गेट दिस थिंग। ओके, ये आया तो ये आता, नहीं तो इधर दिस वन। मगर ऐसा नहीं पढ़ रहे बच्चे, क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा रहे, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन हो गए, सर पढ़ लिए पास नहीं हुए। आप बताए तो 4 क्वेश्चन पढ़े, बोले तो नहीं पढ़ा, नहीं आए सर एग्ज़ाम में। क्यों नहीं आते भाई? आप क्वेश्चन बना के पढ़िए, ये भी मिला के एक क्वेश्चन है, ऐसा पढ़िए। ओके, सो डोंट गो फॉर अदर थिंग्स, जो बोल रहे हैं उन लोगों का सुनना नहीं आप। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास जो है 5 यूनिट से 5 तो मिल गया आपको। 6th यूनिट में जो भी है कहाँ से भी दे सकते हैं, देर इज़ नो गारंटी दैट यहाँ से ज़्यादा देंगे वहाँ से ज़्यादा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँ कैसा देंगे। जनरली वी आर प्रिपेयरिंग दी पेपर, जनरली वी आर टेकिंग फ्रॉम दी ईजी चैप्टर्स। विच वन इज ईजी चैप्टर? 1st यूनिट में आपका क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ ईजी चैप्टर, नहीं बोला तो लेज़र का और ऑप्टिकल फाइबर में ईजी चैप्टर है। वी विल टेक आउट फ्रॉम देयर सम क्वेश्चंस। मगर पता नहीं है जो पेपर बना रहे हैं उनके लिए वेव मैकेनिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको दिखा वेव मैकेनिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज आउटसाइड वेव मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें से एक क्वेश्चन देंगे, 6th वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है उसमें से बनाएंगे, तो अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ से बन रहे हैं वहाँ से बनेगा। तो कौन सा भी 3 पढ़ लीजिए, किस्मत अच्छी है, 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किस्मत अच्छी है तो 4 क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा जो भी है इसमें से आ गया तो 4th पढ़ ले सकते हैं आप, तो 4 क्वेश्चन तो मिल गएंगे, हो गया। सो पूरे मतलब चॉइस के साथ लिख दीजिए आप, चॉइस बिना चॉइस छोड़ दे के लिख दिए गए आप। 60 क्वेश्चन तो इसके अंदर कवर करना है। मैं जो 15 क्वेश्चन दिया, 15 क्वेश्चन में 15 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, नहीं कौन से भी 2 प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर के शॉर्ट्स पढ़िए, तो उसमें से मिनिमम तो आपको आ जाएंगे। ओके, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अभी शुरू करेंगे। सो वी विल स्टार्ट हियर दैट crystal systems. We know that 1 or 2 crystal systems I will show you that. First one is the cubic crystal systems. cubic दिखाऊंगा, so 3 दिखाऊंगा, आप पढ़ लीजिए। So lattice parameter ले लीजिए, very simple. Lattice parameters you have take out. Lattice parameters, okay. So A is equals to B is equals to C and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degrees. You will take out like this. ओके, लैटिस पैरामीटर कंपलसरी लिखना है। तो आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डालिए। सो वी हैव टू ट्राई टू ड्रा द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 डायमेंशनल जंपर, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 1 मिनट। ओके, एक्स वाई जेड। चलिए, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स, मुश्किल होगा, ये वाला x, ये वाला y, ये वाला z। ओके, आई हैव टेकन 3 एक्सिस, आई हैव टेकन। सो इधर जो भी है यहाँ पे 0 होगा आपका, इधर जो भी है आई कंसिडर एज ए दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर लेंथ इज ये, आई हैव टेकन फ्रॉम हियर टू हियर आई हैव टेकन लेंथ b, हियर टू हियर आई हैव टेकन c इज अ लेंथ। ये के अपोजिट में जो भी होगा अल्फा, सो b के अपोजिट में जो होगा बीटा एंड c के अपोजिट में जो होगा गामा। वेरी इजी टू टेक आउट। सो अब कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए और बी सेम रखने की कोशिश करिए। जेड जो भी है, सी जो भी है, मतलब जेड एक्सिस ये आपके तरफ है, देखो पेन लगा दिया, देखिए आपके तरफ है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रा ऑन द बोर्ड। बोर्ड कैसा ही है कि जेड एक्सिस जो भी है ऐसा टर्न होगा, ये तो ड्रा करना बहुत मुश्किल है। अगर यही लेंथ अगर इसमें ऐसा ड्रा करे तो ये छोटा दिखता, तो ये वाला एक्सिस ड्रा करना मुश्किल है, मतलब सी वाला ड्रा करना मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। एंड सी इज़ एलांगेटेड विद दिस अल्फ़ा एंड बीटा। सी को लग के कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा, मतलब सी को लग के जो एक्सिस है, वो जो एंगल्स है वो भी दिखाना मुश्किल होगा। मगर आप क्या करेंगे, आप अल्फ़ा नहीं दिखा सकते, अल्फ़ा का एंगल नहीं दिखा सकते, आप बीटा का एंगल नहीं दिखा सकते, ओनली यू आर शोइंग, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गामा, गामा के ऊपर ही दिखा लेना। और ये और बी दिखा सकते हैं आप, मगर सी एक्सिस को नहीं दिखा सकते, क्यों, ये आपके तरफ है, उनसे सी वाला नहीं दिखा, मतलब यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए एंड बी एंड गामा। कौन सा भी स्ट्रक्चर को ए एंड बी आप
दिखाने की कोशिश करिए। ओके, क्लियर। सो अभी ये स्ट्रक्चर में क्यूबिक दिखा दिया, इसके अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट यू हैव ट्राइक्लिनिक। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, नाउ ट्राइक्लिनिक, चलिए इसको जोड़ा हटा देंगे, ट्राइक्लिनिक ले आऊँगा। तो जो होगा आपका सिक्स्थ वाला मैंने ले लिया डायरेक्ट, आप बाकी के पूरे कर सकते हैं आप। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एक 3 बताऊंगा, बाकी के आप कर सकते हैं। तो ट्राइक्लिनिक ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। चलिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फिर से एक निकालूंगा, फिर से ड्रा करूँगा, आपको दिखाऊँगा। सो आई विल गो फॉर हियर। सो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो फिर से क्या करूँगा, आई एम ट्राइंग टू ड्रा हियर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। चलिए ड्रा करिए अभी। So this side you have x, this side you have y, this side you have z, this side you have z. ओके, सो आप ए को कंसिडरेट करना है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये गलत हो गया। तो ये बी सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, फिर से ड्रा करके देखेंगे। सो मैं क्या करूँगा, पहले एक्सिस लूँगा। सो ए इज़ वेरी स्मॉल, बी इज़ वेरी बिगर। ओके, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों भी सेम नहीं है, सी वाला छोटा ट्राई करने की कोशिश करूँगा। और इसके अंदर 90 नहीं चाहिए, 90 नहीं चाहिए बोले तो फिर 90 आ गया, थोड़ा सा झुका दिया मैं। सो दिस इज़ योर गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। सही है ना, गामा को कंसंट्रेट कर सकते हैं आप। ए और बी देखिए थोड़ा सा अलग से है। सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस, थोड़ा सा इसको इधर झुका देंगे तो ईजी कन्वीनियंट रहता अपने लिए। सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ लाइक दिस, थोड़ा झुका दिया मैंने, क्लियर। सो थोड़ा झुका के डालूँगा, राइट। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तीनों भी अलग अलग है। और एंगल गामा जो भी है 90 डिग्रीज, ये कुछ तो भी होने दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अल्फा इज़ मे बी इट लुक लाइक ए 120 डिग्रीज, गामा आल्सो इट लुक लाइक ए 110 डिग्रीज, मे बी। सो आई डोंट नो दैट what we have to do is alpha beta we cannot show, gamma only we will show, it is not 90 degrees। तो अच्छा होगा, क्लियर। ट्राइक्लिनिक तो क्लियर। तो चलिए लास्ट वाला हेक्सागोनल पे जाएंगे, विल गो फॉर द हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो पता है आपको, चलिए हेक्सागोनल पे जाएंगे। अरेज कर दूँ, चलिए फटाफट अरेज कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। तो हेक्सागोनल पे जाऊंगा, तो हेक्सागोनल, सो हेक्सागोनल जो भी होगा आपका लैटिस पैरामीटर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे 7th वन वाला हेक्सागोनल है। सो आई हैव टेकन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ए इज इक्वल्स टू बी but not equals to C, and alpha comma beta, alpha is equals to beta is equals to 90 degrees, gamma is equals to 120 डिग्रीज। मेरे ख्याल से इतना ही होगा। ओके चलिए, हेक्सागोनल तो डिफरेंट है, पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हेक्सागोनल डालिए आप, ये वाला मैंने ले लिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो आई एम ट्राइंग टू ड्रा लाइक दिस, राइट। एक हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर आ गया, राइट। हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 फेसेस यू हैव, इसके नीचे सेम डालेंगे हेक्सागोनल, राइट। हेक्सागोनल आई एम ट्राइंग टू ड्रा हेक्सागोनल। सो ये वाला होगा आपका हेक्सागोनल, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर दूंगा, ओके। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर,
सो ये होगा आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल में अब एक्सिस दिखाइए, ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। आपका ये यहाँ पे लगाइए, ये वाला और बी वाला सेम है बट नॉट इक्वल्स टू सी। एंड यूर गामा इज इक्वल्स टू 120। गामा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है ना, सी के अपोजिट में गामा ये है, गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। सो एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्टेड, देन दिस इज योर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। चलिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये ऊपर से कनेक्ट करना है, ये ऊपर से कनेक्ट करना है, नीचे वाला नीचे से कनेक्ट करना है। दिस इज़ योर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। चलिए ओवर। सो रिमेनिंग यू हैव टू ड्रा इट। रिमेनिंग आप ड्रा कर सकते हैं, यही कंडीशन पे ड्रा कर सकते हैं, खाली हेक्सागोनल मुश्किल है और क्यूबिक का ट्राइक्लिनिक की जो भी है ईजी है। ओके चलिए ओके चलिए आप मिलर इंडिसेस पे जाएंगे। मिलर इंडिसेस आपका न्यूमेरिकल जो भी है मिलर इंडिसेस पे आ सकता, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी में भी आ सकता है। इंटर अगर पोलर डिफ्रैक्शन मेथड में सेकंड पार्ट में बी में अगर नहीं आया तो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ओके, सो मिलर इंडिसेस में आपको न्यूमेरिकल आ सकता, मिलर इंडिसेस में न्यूमेरिकल आ सकता आपको। चलिए मिलर इंडिसेस पे क्या है आपका, मिलर इंडिसेस बताइए फटाफट। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस बताइए। सो मिलर इंडिसेस में फर्स्ट जो भी है लेट अस कंसिडर यानी थ्री एक्सिस कंसिडर करिए आप, थ्री एक्सिस कंसिडर करिए। इसके ऊपर जो भी है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1a, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 3a कंसिडर करिए, राइट। यहाँ पे 1a, ये 1b, सॉरी 1b, सो 2b एंड 3b कंसिडर करिए, 1c, 2c एंड 3c कंसिडर करिए। सो कौन से भी तीन आप यू विल टेक आउट एनी थ्री, यू विल टेक आउट एज ओके। सो प्लेन, दिस इज द ए बी सी प्लेन, ए बी सी प्लेन। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, step number 1, you have to take out intercepts, take intercepts ले लिए। क्या है ये इसके अंदर, ओके 2a एंड 2b एंड 3c। एंड स्टेप नंबर 2, take coefficients, take coefficients, okay 2:3, okay। step number 3, take reciprocal, then you will get 1/2:1/3, and take LCM. step number 5, reduce it to smallest number, that is called LCM. You take out LCM and reduce it to smallest number, reduce it to smallest numbers you take out. What is the LCM you will get here? 2 2 3, what is the getting, 2 2 3 you will take out, 2 1 ja 2 1 ja 3 you got 3 2 ja 6 you will get 6, okay। So next what you are getting, 3 you will get here, 3 you will get here, 2 will get here. Then you write down this in open bracket. Step 5 I am writing here, step right open bracket, you write down what is you are writing, 3 3 2, your Miller indices. This is nothing but HKL. Now he asking the numerical on this, you have to draw this sketch Miller indices, he asking that,
Okay, if you go for this is for a 4 marks question, he will going to ask. Very rare cases 7 mark question he will going to ask. Very so Miller indices are asking. If you 7 marks question he will going to ask, he will ask from the one numerical from this. Okay. Right, take out screenshot and I will go for the to draw the Miller indices for sketch for Miller indices 100010111 if you go for that. Okay, so can I erase this thing? So I'll going to erase, just you take out screenshot. Okay, I'll going to erase this thing. Next I will go for 100. I will going to take out. What is a 1000010? Right, I will go for sketch for, he asking the question like this, sketch for 100 he will ask. Then how to draw that sketch for 100? Just you take out reciprocal 1 by 1 and 1 by 0 and 1 by 0. Then 1 by 1 is evaluating infinity, you will get infinity, you will get. How to draw that? So sketch for this structure. Okay, so like this you have to draw. Right, so this is your x-axis. Can I write it here? 1a and alpha b, infinitive b and infinitive c. So 1a means this is from here 0, this is 1 unit, 1a here you have, this is 1b you have, this is 1c you have. So 1a is asking, 1a you have to take out, 1a is this point. Okay, infinitive b means this will go like this, it will not going to touch. Infinitive c means it will not going to touch. Means if you are going for 3-dimensional structure, the 4 points are here. Okay, I will scratch like this face, it is indicating that 100. Okay, simple thing. And try for 111. Now you go try for 111, 111. Okay, I will go for 111 sketch for 111. So I'm going for 1111. So how to draw the structure like this, right? So don't speak out other things than your subject. Okay, so I'm finding that most of the messages are generally your speak out. आप बात करना चाह रहे तो सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप लगा के गालियाँ दे लो, कुछ तो भी करो. जब तक इसके अंदर है सीरियसली सुनो, इसके अंदर दूसरे बात नहीं करना. ओके, सो यू लास्ट दी सब्जेक्ट रिलेटेड. ओके, यू डिस्कस सब्जेक्ट रिलेटेड, डोंट गो फॉर अदर थिंग्स. बात करना है तो सेपरेट लगा के बात करिए आप. ओके, सो आई विल गो फॉर 111, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. Then I will get 1, 1, 1, 1a, 1b, 1c. Then I have to draw the structure like this. So मैं structure बता रहा हूँ आपको ऐसा. Okay, so then I will go for the structure. I have, this is the 1a, this is 1b, this is 1c. So 0 से. सो देखिए 1a का जो 4 चीज़ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट. ये ड्रॉ करें, अब ये ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करें. 1c का जो भी है इधर एक स्ट्रक्चर है. तो यू विल गेट थ्री स्ट्रक्चर्स यू विल गेट. ओके, आई नीड 1 प्लेन.
3 प्लेन्स है, दिस ये भी प्लेन होता, अगर ये भी स्क्रैच करे तो ये भी प्लेन होता, जैसे आप ड्रा करें तो ये भी प्लेन होगा आपका, ऐसा ड्रा करें तो ये भी प्लेन हो जाता, अगर आप ये ड्रा करें तो ये भी प्लेन होगा, इधर साइड अगर ड्रॉप करें तो ये भी प्लेन होगा, मतलब 3 3 नहीं चाहिए मेरे को. Combined I will get only one plane, combined I will get only one plane, then I have to add all this thing, then I will get here only one plane, I will get one plane, I will get. So I will scratch this position, so then I will get only one plane. चलिए हो गया. अब डालिए 1 to 1, ये 1 to 1 डालिए फटाफट, 1 to 1 डालिए. चलिए 1 to 1 you will get here. So if you are not discussing with other things, I will go very fast. वे आप डिस्कस करते रहे तो स्लो हो जाता हो. सो 1 to 1 आई विल गो फॉर दैट. 1 to 1 फटाफट करेंगे. 1 to 1 आई विल गो फॉर 1 by 1, 1 by 2 एंड 1 by 2. 1 by 1 का मतलब 1 by 2 मतलब क्या हुआ, ये 1 by 2 का मतलब 0.5 है, 0.5 रखिए, नहीं तो 1 by 2 भी रखिए, कोई बात नहीं है. सो 1 A एंड 0.5 B एंड 1 C. सो यू हैव गो फॉर द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर डालिए अभी. स्ट्रक्चर आई एम ड्राइंग हियर. सो अगर स्ट्रक्चर डाला मैं, ओके, आई विल गो फॉर द स्ट्रक्चर. देन ये का जो भी है 1 A डालिए, 1 A नोट करिए. सो आई विल नोट डाउन हियर 1 A. दिस इज़ योर 1 A. सो दिस इज़ योर हाफ 0.5, ये 1 है ना, तो ये आपका 0.5 B एंड दिस इज़ योर 1 C. तो ये ऐड करिए, यू विल गेट ओनली वन स्ट्रक्चर यू विल गेट. क्लियर इसका आंसर. चलिए अभी जाएंगे पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड. मिलर इंडिसेस तो ख़त्म हो गया. सो ऐसा कौन सा भी स्ट्रक्चर डाल सकते हैं. मिलर इंडिसेस विथ योर न्यूमेरिकल यू विल आस्क फॉर दी हाउ मेनी मार्क्स, 6 7 मार्क्स यू विल गोइंग टू आस्क. ओके. सो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड आएंगे. की पॉइंट्स बताऊंगा, फटाफट ले लेना. पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड चलो क्लियर करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लिए. चलो क्लियर. आई विल गो फॉर पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड. ही विल आस्क व्हाट इज अ explain about powder diffraction method. Powder diffraction method. Powder diffraction method. Powder diffraction method. Then I will going to take out one X-ray tube. Key point बता रहा हूँ मैं. I will going to take out one X-ray tube, which is going to emitting the X-ray. Okay, this is your X-ray tube emitting the X-ray. So this is your slit 1, slit 2, slit 2 you are going to take out, and this is your powder sample where we have to take out the powder, and we have to place out inside the Debye shearer camera. This is also called Debye shearer method. Debye shearer method. Okay, this is Debye shearer camera. This is also called Debye shearer method, right? So you have inside the photographic film, you have to keep out here photographic film. Photographic film I am placing this thing. Okay, now so I have to take out you will get here some cone, you will get here like this with angle of 2 theta, with angle of 2 theta and angle of 2 theta this side. Clearly you have to mention it. The students are drawing but properly you are not drawing. So you have to draw this cone properly, and you have to mention here what is the angle you will get here. Okay, here to here camera radius is r, and here to here the distance, arc distance is, you know that your intermediate you have studied that arc distance. Okay, this is one cone, so this opposite side also you will get one cone, and one more cone you will get here. So one more cone and one more cone you will get like this continuously. This is a diffraction pattern. Okay, you note down what is this one. This is sample, this is sample,
and this is the diffraction pattern. What is that? Diffraction pattern. Everything you have to mention. Diffraction pattern. Okay, diffraction pattern. So now from this cone I have to write down. Then I will take out this X-ray film. Then you have starting point and followed by some cones and ending point followed by cones. This S length only here we have. This camera radius R you have. From this 4 theta is equals to S by R you are writing. Correct or not? This is the cone you have. This is angle is 4 theta. Opposite by what is the radius is our formula, arc formula. From using this theta you are going to find out. What you are finding? Theta you are going to find out. By using theta, 2d sin theta is equals to n lambda formula. Sin theta is equals to n lambda formula. D you are finding. Correct or not? D you are finding. Because lambda you know that wavelength of X-ray. This is the wavelength of X-ray wavelength, and n is the order of diffraction. First cone means 1 order, 2, 3, 4 like that. Angle you are getting theta from here, and D you are finding. From D, the relation between D is equals to A by under root of h square k square L square. If you know h square k square L square, then you can find out the A value. If A value you know that, then you have to know that. So what you are finding? Crystal structure you are going to find out. Then make it your own story from here. Crystal structure you have to find out. So everything story you have here to find the crystal structure here, clear this concept. This is for 7 marks. So I have written on the board key points. Then you have to make it your own words, your notes. Let us consider X-ray tube is emitting the X-ray. It is passing from the slit 1 and slit 2 and fall on the powder sample. Okay, powder sample is diffracted and it is in the form of cones, and this is cones are recorded, means diffraction pattern is recorded in the device shearer camera. Then the pattern is taken out. Then it look like some arcs, starting point, ending point, followed by arcs, AR, CS arcs. Then arc length is S, camera radius is R, and 4 theta is equals to S by R. Theta you are going to find out from the theta. D from Brock's law, 2d sin theta equals to n lambda. Theta value you are going to find out. So D value you are going to find out. From D, HKL if you know, then you have to find out the A value. From this A value you can find out the crystal structure. This is a story about so what you have powder diffraction method. Okay, this is the first question. First part 1A you have to complete. B is your, so what is that derivation for the Schrodinger time? What is that? Derivation for the Schottky defect, Frenkel defect, and these two from the vacancy you have to note down. Okay, clear this concept. You will going to find out this derivation from the, why, because it will take a lot of time. You will find out from the my YouTube channel. You will get this derivation. Okay, so carefully you sit and try to learn from the Schottky defect, Frenkel defect. Okay, so you learn this Frenkel and Schottky defect. Definitely this is 1A part, 1B part is from the Frenkel, Schottky, and you will get one derivation from that. Okay, 1A and 1B you have. Okay, it's very lengthy derivation is there. Carefully, neatly you have to do it. Right, clear this concept. Chalo. So the time is 8:15. I am going to cover some Cronin-Penny model key points. Okay, these are very important. That's why I'll try to cover this Cronin-Penny model important points. Chalo, can I erase this thing? Okay, so I will erase this part. Then we have to know Cronin-Penny model, some key points. In Cronin-Penny model, I will going to close after this Cronin-Penny model. In Cronin-Penny model, so tomorrow I will going to cover some topics on Schrodinger time independent particle in a potential box. Okay, some derivations I will try to cover it. Okay,
So chronic penny model, so you have to draw here the potential box, potential one atom like a one box, then you have to draw it like a potential boxes. Positive you have positives, and here some reference you take out here. So here the reference you have to take out. So potential is here v0, potential is v0. This is the region 1 and region 2 you take out, and the region 1 is considered a, this is the b. Once again b is repeating, I mean this part is a, this part is where you have the here downside part is b, and this part is a, this part is b, it is lighting. So suppose it is a reference point 0, then its side is minus 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 you have, correct or not? Minus a you have, minus minus you have, means a b repeating, this is the repetition, it is given by Cronin, and Penny is given mathematical equation for this. Okay, so then we will writing this Schrodinger time independent equation, dou square psi by dou x square plus 2m by h bar square e minus b into c psi is equals to 0. This is your Schrodinger time independent wave equation. You have to write down Schrodinger time independent wave equation. Whose equation? Schrodinger time independent equation. Schrodinger equation, simply Schrodinger equation, not a problem. Schrodinger equation, you have to write down Schrodinger equation, Schrodinger time independent wave equation. Okay, so then I will go for this first region 1 I have to place out, region 1, region 1 I have to place out, then I will get dou square psi by dou x square plus 2m by h bar square, here h bar square, h bar square e minus 0, e minus 0, v in v place what you have to place out, 0 into psi is equals to 0, then I have written dou square psi by dou x square, so plus 2m by h bar square into e into psi is equals to 0. This is first equation. This first equation I have to put in box. So which one is important, that I have to put in the box. Okay, so this part I consider as a alpha square, then I'm writing, so I have to replace with this alpha square, but otherwise I'll write it here, dou square psi by dou x square plus alpha square into psi is equal to 0. Can I take out this as a equation number 1? So when I'm replacing this is I consider as a equation number 1. Okay, this is like a differential form of wave equation, differential form of wave equation I consider. Alright, so I have to place out here second part, so where this region 2 I have to place out. Okay, so can I erase this thing here up to this point? So second region I am placing here, the region 2 I am placing. So in this region I have to place out here dou square psi by dou x square plus 2m by h bar square as e into v naught. V in v place v naught I have to place into psi is equals to 0. Then I have to replace this all the things with beta square, then I am writing dou square psi by dou x square plus beta square into psi is equals to 0. This is also different form of wave equation. Then I am writing here, so this part is 2 equation. Then solution is given by block solution is given. Block solution I have written here, psi of x equals to e power, so ukx into e power ikx. This is solution, this is the equation number 3. So differentiate equation number 3, substitute in 1 and 2, then you will get final equation is, so p you have, I don't have any here Wi-Fi, so there is a problem with here our data. So students will going to continue tomorrow. Okay, so I'm going to close.